Let's start with very basic test. And this is the most commonly ordered test, so it is important for residents to know what this. I think even undergraduates will gain some knowledge from this, but this mostly for the first year PGs who are just joining in hematology labs and they are not understanding what is happening. I have tried to make it very simplified and going to explain it also like that to you. Okay. CBC, complete blood count, it is the most commonly ordered test. That is why it is important for us to do. And yes, we have automated hemoanalyzers, but they are always in addition to the PBS, especially if it's abnormal findings. PBS examination, like that is manual microscopy, they're not an alternative to it, right? This will be the outline of the video. Why CBC? What is CBC? And how is CBC? So what is CBC? What are we doing in CBC? The components of CBC. Why CBC? Why is CBC so important? इतनी भी क्या बड़ी बात है कि हमारे पास automated machines में भी हम CBC करवा रहे हैं? Because it is most commonly ordered test, but and gives a wide range of diagnosis. It can be indicated by just CBC if you know well enough, if the sample is collected well enough. How is CBC? तो उसमें briefly I will tell you about वेनेपंक्चर फ्लेबोटमी सैंपल ऑल्सो, क्योंकि उसमें भी एरर आने का चांस होता है. देन विल डिस्कस द नॉर्मल रेफरेंस रेंजेस, बिकॉज उसके बिना क्या ही कर रहे हैं हम हेमेटोलॉजी में. एंड देन ऑटोमेटेड हीमो एनालाइजर्स जो आपका मेडोनिक 3 पार्ट या 5 पार्ट है, उनको कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं, उन पे जो हिस्टोग्राम्स आ रहे हैं या वैल्यू आ रही हैं, फ्लैगिंग हो रही है जो. And then very briefly I will discuss approach to anemias. ये anemia का topic नहीं है. This video is not for anemias. I will make separate video if you want me to. This is very brief introduction to CBC interpretation from your hemoanalyzers and histograms. Okay, let's go. So again, methods of measurement of HB or methods of measurement of all of these things that are not related to CBC, I have not done that. और PBS examination की detail तो इसमें बिल्कुल भी नहीं है. मैंने just आपको chart से आप कैसे बता सकते हो कि हाँ इसमें कुछ गड़बड़ है, and then you look at the smear. तो very briefly मैंने discuss किए हैं कि हाँ cell की morphology and all that, but this is not anemia की video. Okay. What is CBC history? We had the old microscope. So पुराने जमाने में मैनुअल माइक्रोस्कोपी करते थे. क्या क्या दे पाते हो उस पे आप? HB भी दे पाते थे. थोड़ा सा वेरीड रहता है इंटर वेरिएशन, बट HB दे पाते थे. TLC और डिफरेंशियल काउंट और प्लेटलेट काउंट. इससे ज्यादा आप मैनुअली कर ही नहीं सकते कुछ. अब हम कोरिलेट करते हैं एमसीवी को, बट अगेन वो आप ऑटोमेटेड एनालाइजर से कोरिलेट करते हैं, खुद नहीं देते सकते वो कभी, है ना. तो मैनु और इतने सैंपल्स आप कैसे इंटरप्रेट करेंगे? और अब हमारे पास हाई लेवल की मशीन आ गई हैं, ऑटोमेटेड हीमो एनालिसिस आ गए हैं, 3 पार्ट, 5 पार्ट्स, 10 पार्ट, 12 पार्ट, 20 पार्ट भी हो सकता है फ्यूचर में. तो सो स्टार्टेड विद मैनुअल माइक्रोस्कोपी, जस्ट लाइक एनी अदर फील्ड. हमने बहुत बेसिक से शुरू किया मैनुअल माइक्रोस्कोपी से. इट्स नॉट, मैनुअल माइक्रोस्कोपी हैज नॉट बीन रिप्लेस्ड बाय ऑटोमेटेड हीमो एनालिसिस, बाय द वे. मेडोनिक आपका एनालाइजर है, आपकी नॉर्मल आ रही है, सब कुछ कोरिलेट हो रहा है, रूल ऑफ 3 फॉलो हो रहा है, विच विल डिस्कस लेटर. तो ये लाइक हाँ ये नॉर्मल सैंपल है, इस पे स्मेयर बनाने की जरूरत नहीं है. Again 5 part, 10 part, 12 part, जो भी आपका फ्यूचर आ रहा है. लेट्स गो. So what is CBC? So we know that it is a series of tests. It's a complete blood count, first of all, right? It's a series of tests because of which you can evaluate the composition and concentration of the all the components of the blood. And we know there are three components, which is three types of cells we have in our blood, which is the RBC, WBCs, and platelets. So the first thing is the counts, whether the counts of those cells are the normal. That's where we will discuss the reference ranges, right? There's a quantification of these cells. That is the most important thing. That is how you get from the histogram or from the 3 part analyzer or even the 5 part analyzer, you get those readings, you get your detail, and you're like, oh, these cells are not count wise, they're not normal. And then discuss the quality of those cells, right? So along with RBC, WBC, platelet, you also have measurement of FHB, hematocrit, and RBC indices, from which you can decide if the patient has anemia or what type of anemia it could be, and you can give a detailed description. And if it is an anemia, you will be like, oh, I think I should get a PBS made of this sample. Then white blood count and differential count, and if the white blood cells are normal, if the count is too high, if the count is too low, and if the cells are abnormal, you are going to make a smear of that patient and examine it, right? Platelet count, again, platelet count can be low, can be high. Platelet volume, mean platelet volume, platelet width, and platelet distribution width, and of course the histograms of RBC, WBCs, and platelets.
So these are the parameters that your pointers will give you: RBC, hemoglobin, hematocrit, MCV, MCH, MCHC, RDW, standard deviation, RDW coefficient value. But the RDW with standard deviation is more efficient. The nucleated RBCs are also given in some, and then reticulocyte count or percentages, and then immature reticulocyte fraction, and then similarly for WBCs and the platelets also. Now, why is CBC? Because it is the most commonly ordered test, whether the clinicians are from your medicine branches or they are from the surgical branches, they will be sending a sample of CBC. Any patient that they see and they see some abnormality in any symptomatology the patient will have, CBC is the most commonly encountered test. That you will see. Even if you open your own lab, let's say in future, CBC will be your CBC will be your bread and butter. Okay, it's a one test, but it has so many uses, right? It can give you the status of your RBC, it can give you the status of WBC, platelets, and any disorders that occur in them. So, for example, we can diagnose anemia. We can discuss the type of anemia it can have and morphological types or any hemoglobinopathies, even bone marrow aplasia can be determined, nutritional deficiencies, parasites can be recognized on the smear, thrombocytopenias and their causes, various viral fevers, autoimmune conditions, infections, and the particular cause of those infections, which particular cell lineage is increased among the WBCs, any hematopoietic malignancies, and to see the effect of various drugs after the patient has been treated with chemo or radio, or even sometimes even stress-induced changes can be seen in the smear. Okay, first of all, how is CBC, as in how are you going to collect your sample, right? So it is said that a good pathologist is first a good technician. Like you have to know why this is wrong or why that might be wrong, and is this smear made right or not. So you should, I will advise the first year residents to know how to take a sample, right? Be good at that, and also how to make a good smear, the tongue shaped smear. I will not be discussing that here, how to make the smear and all that, but those are things that you should also be good at, and also like familiarize yourself with them in the sense that you will like be able to determine in future, oh, this is not wrong or this is right, right? So let's see the procedure in. So first of all, biohazard precautions, you have to be aware of that. uh, you have to have a standardized procedure in your lab, in the sense that you have a kit and then you go, and it's not like randomly आप हवा में कुछ कर रहे हो. So you have to have a stepwise procedure for every lab, not just in that lab. So you take a sample, you withdraw the blood, and you take it in your tube, and you give the patient's information वहाँ पे, and you send the sample to the lab, and you will see the result within a few hours. So items that you should be included in your phlebotomy tray: syringes and needles, of course, tourniquet, any vacutainers, plain, and the other anticoagulants वाला जहाँ से भी आपको sample चाहिए, requisition form. That's the, for a pathologist, if you have not sent the requisition form, it would be impossible to give you the report. And the swabs to be able to clean the skin, sterile gauze swabs or pads, cellulose pads, adhesive dressing, self-sealing plastic bags जिसमें आप लेके जाएंगे अपनी sample वापस, rack to hold the specimen upright, and a puncture-resistant disposal container should also be available. You have to discard the needles, right? Now, you've been given कि patient का sample लेके आओ. Let's say you're a first year resident and you've been asked to take a sample, and you have to take it in the vacutainer. So first of all, you have to have the patient's info, that is this the correct patient, or am I going to label it? And then you have to decide the site. So you can have the antecubital vein or the radial vein or the dorsal vein. I hope you are all familiar with the anatomy. Okay. So site can be antecubital vein or any other visible veins in the forearm, but most commonly it is the antecubital vein. Then you clean it with the swab, right? It can be 70% alcohol, that is isopropane most commonly, or 0.5% chlorhexidine, and then you have to allow to dry spontaneously before being punctured. So even while doing a FNAC procedure, for example, you guys take a lot of alcohol, and then it will not dry normally, right? I will have to either clean it, or you will have to either like wait for a long time. So it has to be just the right amount that it cleans and it dries after a few seconds only. Okay. So the procedure here, of course, needs a tourniquet. Now, the tourniquet की importance है for a pathologist, that it has to be applied just above the site where you want to take the sample from, and as soon as the blood starts coming,
from your vein, you have to release it, because if you delay the release, it will lead to fluid shift and you might see hemoconcentration. And you have to avoid contaminating the tonic with blood, because you will use it with many patients, because there has been infection risk with this also. And also remember, the needle has to go parallel. I think I have a picture of that. The needle has to go parallel with the vein. Okay. So this was the picture that I was talking about. You have to have your syringe parallel to the antecubital vein or whatever vein you have decided to pierce from, and in order to take the sample. And remember, when you're pulling the plunger out, don't like pull it too fast. Just as the blood is filling, let it fill. Okay. So ask the patient to make a fist a few times so the suitable veins will become apparent. If the veins are too small, you can use a butterfly needle. And if it's an obese patient, you can use the dorsum of the hand. But then remember, the dorsum of the hand is more prone for development of hematoma, and those are not the veins. And after hematoma has developed, you can't use that vein. So you have to be careful about the selection of the vein. If a syringe is used for blood collection, the piston has to be withdrawn slowly, and no attempt should be made to withdraw the blood faster than the vein is filling. So as the vein is filling the vacutainer, let it do. Don't like withdraw the blood fast. That will cause hemolysis. Anticoagulant specimens, the ones you have your vacutainer for, the purple top vacutainer, must be mixed by inverting the container several times. Hemolysis can be avoided or minimized if you have a clean apparatus, if you withdraw the blood slowly, if you don't use too fine a needle, delivering the blood gently into the receiver and avoiding frothing during the withdrawal of the blood and subsequent mixing with the anticoagulant. Okay. If the blood is drawn too slowly or inadequately mixed with the anticoagulant, still some coagulation will occur. Okay. After obtaining the blood and releasing the tourniquet, remove the needle and press a sterile swab over the puncture site. Also, elevate the arm after the withdrawal of the needle, and pressure should continue to be applied to the swab with the arm elevated for a minute or two before checking if the bleeding has completely ceased, and then you cover the site with the adhesive dressing. Okay, so after you have taken the collect sample, the container must be firmly capped, of course. If a blood collection fails, it is important to remain calm and consider the possible cause. Obtaining blood from an indwelling line or catheter is a potential source of error, and because they usually flush the central lines with heparin, so you have to first flush them free from heparin, and the first 5 ml of blood has to be discarded. You can't use that first 5 ml of the central line blood for lab testing. And if if IV fluids are being transfused into an arm, the blood sample should not be collected from that arm. It is always advised to collect the blood from the opposite arm. So this is something you must have already read in your PG prep. The order of drawing blood, right? The vacutainers in which you have to collect the blood in order of appearance, right? First is your yellow top, right? The blood culture tube. Then you have your sodium citrate tube, जिसमें आप अपनी coagulation profile करते हो, तो blue stopper one. And then you have a plain tube, serum chemistry वाली. Then heparin tubes with or without gel, the green stopper. Then EDTA, जो हमारी EDTA वाला है, lavender stopper, जिसमें आप अपनी CBC वगैरह कर रहे हो, whole blood हेमेटोलॉजी बेसिकली जिसमें आप करते हो, और फिर ग्लाइकोलिटिक इनहिबिटर जिसमें सोडियम फ्लोराइड यूज होता है एज एन एंटीकोगुलेंट, तो ग्रे स्टॉपर वाली ट्यूब आप यूज करते हो. This is again the use of every tube, specimen type, right, and the anticoagulant that it is using. Okay, these both pictures I've taken from Henry Todd, by the way. Again, I hope you've done in your internship, you've been posted in NICU, and in those little infants, you've taken the sample. So it is taken from heel. The sample is taken from the heel. You know, छोटे बच्चों की glucose test करते हैं ना बार बार. I hope you were posted in NICU. So the sample was taken, the capillary sample was taken, right? So now what can be the faults? What is the reason for faulty error occurring in your specimen collection? So before collection, patient should have urinated within 30 minutes, and food or water intake should have been within 2 hours. Patient should not be smoking. Physical activity within 20 minutes should not be done. So these are things that you to be avoided. These are reasons for error, by the way. This I've taken from Desi. Most of the things that I've taken here are from Desi. Okay. Stress, drug or dietary supplementation within 8 hours. And during collection, you've taken at daytime or nighttime, posture, patient was lying, standing, or sitting. That also affect. And the tourniquet one, I already told you, it causes hemoconcentration. And especially if you pull too much, if you apply too much negative pressure when drawing the blood, that will cause hemolysis. Incorrect type of the tube, capillary versus venous blood.
handling of the specimen, if you didn't mix the anticoagulant properly, or if there is insufficient or excess anticoagulant, or if the patient's information is wrong only, specimen storage was inadequate, or delay in transit to the lab. Now you've taken the test, you've taken the sample. What next? You run it through your Medonic analyzer or 5-part, 3-part, whatever you have, right? And before analyzing this, before analyzing whether the patient's report is normal or abnormal, you have to know the normal reference ranges. So these reference ranges, these I've taken from DACY, okay? DACY is clinical hematology. This book is a standard book everywhere. These are the values that are considered. You might see a little bit difference in other books. There's not too much variation, right? This is for adult population, by the way. For newborns and for children, or even for pregnant ladies, there's my differences. There are differences in these ranges. These are the things that you have to ratify. Okay, there's no other way about it. So RBC count in men and women, hemoglobin concentration in men and women, and of course you have to discuss plus minus 2 or plus minus 5. Packed cell volume, the hematocrit, MCV, MCH, MCHC, RDW, and then I would go for retic count and WBC count and DLC. Okay, and platelet count, of course. एंड ब्लीडिंग टाइम ऑल्सो. सो दीज आर द वैल्यूज दैट यू हैव टू जस्ट रिमेंबर. अपने रूम में अगर आपको प्रिंट करके लगानी है या अपने हैंड से लिख के लगानी है, आप लगा लीजिए ताकि आप डेली देखें इनको. These reference ranges are extremely important for postgraduates, because without this, why are you even posted in the hematology lab, right? Why are you even looking at me as if you don't know these, right? Okay. Now, in your automatic blood cell counter, I'm just going to briefly explain. So you've put the specimen in the rack, right? They collect the blood. This is the anticoagulant blood. And according to the cell size, the RBC, platelets count, and WBC count will be collected. And this generates a graph. I do have a video on flow cytometry and how this works, but for now, I just want you to know that it creates a histogram. Okay, that is the histogram that shows along with the report. Okay, and histogram and report को आप correlate करते, मतलब histogram and report को आप अपनी smear से correlate करते हो if it is abnormal. Automation is complementary to PBS examination. It is not a replacement. Automated, the heme analyzer is the primary testing vehicle in any hematology lab. You need it, right? It can perform RBC counts and indices, platelet count and its indices, WBC count, 5-part DLC, and retic count. Now coming to this counters. Counters have their own mechanics, their own principles. There's hydraulics, there is pneumatics, and there is electrical systems. You can read about these in your books in detail. So there's two main principles for at least a 3-part counter. For a 5-part counter, there are two other principles in addition to these, but 3-part counter, you have impedance, electrical impedance, and optical light scattering, which is happening, which is giving you all these indices on the left, all the report. So basically, a poorly conductive blood cell will pass through an aperture and produces and increases in the impedance. So impedance is basically there's a negative and there's a positive. So between the electrodes, it will produce an impedance, whether it will increase it mostly. The strength of that pulse that is generated because of that impedance, because of that positive and negative, may jo increase ya aaya hai because of the cell that is passing. The pulse is generated, a frequency is generated, and that strength is proportional to the size, and the number of pulses are equal to the cell count. Okay, and then you have your histogram. This is your RBC histogram, this is your WBC histogram. I'm going to go about these in details, how you know this is normal. So let's discuss these entities, first 5 entities as in the cell lineages one by one. So first we're going to discuss the RBCs, right? So this is your normal RBC histogram where you've plotted RBC volume. So RBC volume means mean corpuscular volume measure कर रहे हैं हम in which is in relation to the numbers which are plotted on the y-axis, right? हमने machine पे एक lower limit set किया है और एक upper limit set किया है. This is set on your machine already, right? तो उसमें आपका जो normal bell shaped curve आना चाहिए और जो maximum है वो 80 to 100 की range में आ रहे हैं. That is how you know कि दो आपकी normal MCV है. आप जब रीड कर रहे हो उसके साथ साथ आई वुड एडवाइस कि हिस्टोग्राम भी देखो. ओके, नाउ दिस इज वो एमसीवी का कर्व था. अब ये आरडीडब्ल्यू का कर्व है. आरडीडब्ल्यू इज, वी नो दैट दिस इज राइट सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ. दिस इंडिकेट्स एन आइसोसाइटोसिस.
मतलब सेल्स में कितनी वेरिएशन है, आरबीसीज में कम है ज्यादा है, ठीक है। अगर बहुत कम वेरिएशन है, यानी कि मोस्ट ऑफ द आरबीसीज आर सिमिलर लुकिंग, इट इज अ होमोजेनस पॉपुलेशन ऑफ आरबीसी, ज्यादा वेरिएशन नहीं है साइज में, तो आपका नैरो पीक होगी, वो ये नैरो कर्व बनेगा, ठीक है। बट अगर आरडीडब्ल्यू ज्यादा है तो आपका वो थोड़ा वाइड बनेगा, क्योंकि साइज इधर उधर जा रहा है, एनाइसोसाइटोसिस ज्यादा है, तो वो ब्रॉडर कर्व होगा, ठीक है। एंड रिमेंबर आरडीडब्ल्यू कभी डिक्रीज नहीं होती, आरडीडब्ल्यू देयर इज नो सच थिंग, आरडीडब्ल्यू इज इधर नॉर्मल और इट इज इंक्रीज्ड। और एमसी एच और एमसीएचसी और हेमाटोक्रिट, आप इन सब इसके बाद हमारा एक आरबीसी काउंट आ गया। आरबीसी काउंट भी आपका वो जो इम्पिडेंस मीटर है वो काउंट करता है आरबीसी सेल साइज के बेसिस पे, सब सेल्स का वो काउंट करता है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट का। तो उसमें आपका आरबीसी काउंट दे दिया उसने, आपकी एच भी दे दी, उससे आप एमसीएच और अगर हेमाटोक्रिट है एमसीएचसी आप कैलकुलेट कर सकते हो नॉर्मली भी। और hematocrit up RBC count into MCVC. These formulas are important for you to remember, okay? Now, so by the way, there's a rule of 3. I hope every first year knows this. हीमोग्लोबिन आपकी सबसे फर्स्ट रीडिंग आपकी जो सीबीसी पे होती है वो हीमोग्लोबिन है। तो लेट्स से किसी पेशेंट की 10 हीमोग्लोबिन है, तो इंटू 3 करके देखो हमेशा, तो दैट शुड बी अराउंड हिमेटोक्रिट 30 या फिर 27 हो सकती है इस पेशेंट की, या 32 हो सकती है, यानी कि 3 टाइम्स उसकी हिमेटोक्रिट की वैल्यू होनी ही चाहिए, दैट इज अ नॉर्मल सैंपल, ओके। एंड और आरबीसी काउंट को जब इंटू 3 करते हैं, दैट शुड बी दी पेशेंट। सो लेट्स से कि पेशेंट का आरबीसी काउंट था 3.7 मिलियन, तो 3.7 को आप राउंड आउट कर सकते हो 4 इंटू 3, एंड 3.7 इज अ क्वाइट गुड पॉपुलेशन ऑफ आरबीसीज, राइट, बाय द वे। सो लेट्स से ये 4 था, मतलब 3.7 को राउंड अबाउट कर लिया, 4 इंटू 3 इज 12, तो यानी कि उस पेशेंट की एच बी 12 होनी चाहिए। सो दिस यू जस्ट हैव टू रिमेंबर, जस्ट टू गिव, आई विल गिव यू एन एग्जांपल आल्सो, delete all of this. Now coming to these parameters one by one. MCV, you know, it is mean corpuscular volume, right? It gives the measure of average size of RBC. हमने इसका ग्राफ देख लिया, 80 to 100 फेमटोलीटर नॉर्मल है, अगर 80 से कम है तो माइक्रोसाइट बोलते हैं, 80 100 से ज्यादा है मैक्रोसाइट। और अगर आपको ये रीडिंग आ रही है या फिर आपको हिस्टोग्राम पे भी दिख रहा है, आपको साथ में लिखाया भी आ जाता है, फ्लैगिंग, देयर समथिंग कॉल्ड एज फ्लैगिंग आल्सो। तो वो फ्लैगिंग होती है, आप देखना कि वो बाकी रीडिंग से डिफरेंट होती है। जब नॉर्मल होता है तो वो फ्लैगिंग नहीं करता, जब अब नॉर्मल रीडिंग होती है वो फ्लैगिंग करता है, तो उसमें आपको पता है स्मेयर बना के ही देखना पड़ेगा। Then you have your MCH, which hemoglobin, which gives the average amount of hemoglobin कितना है, तो इसमें 27 to 30 ग्राम, 32 पिकोग्राम, ठीक है, ठीक है। नॉर्मल MCH 27 to 32 पिकोग्राम, और हमने पीछे फॉर्मूला MCH का डिस्कस कर लिया हुआ है, ठीक है। क्या MCHC refers to the concentration of hemoglobin in packed RBCs. MCHC packed volume से कैलकुलेट कर सकते हैं, MCH हीमोग्लोबिन से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। और इसकी 32 to 36% होना चाहिए नॉर्मोक्रोमिक में, अगर लेस देन 32 है तो हाइपो, मोर देन 36 है तो हाइपरक्रोमिक, ठीक है। आरडीडब्ल्यू हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और आरबीसी काउंट होता है, एक एग्जांपल देना चाह रही थी, इसमें शो नहीं हो रही, हाँ, ठीक है। सो लेट्स से ये पेशेंट की एच, सबसे पहले आपके पास एच बी होता है, सबसे पहले एच बी देखो 8, तो यू थिंक 8 एच बी है, तो 8 इंटू, हर अपने दिमाग में डाल लो कि जब तुमने एच बी देखा यार इस 8 इंटू 3, तो इसकी हिमेटोक्रिट 24 25 26 के आसपास होनी चाहिए, ठीक है। और फिर अगर आरबीसी, फिर देखो आरबीसी नीचे आते आते आरबीसी काउंट आता है, एमसीवी के ऊपर आता है आरबीसी काउंट, तो यू आर लाइक यार ये कितना है, 3.8, हाँ, 3 इंटू 3 कितना होता है, 9, तो उसके आसपास ही इसकी एच बी है। तो सिमिलरली इवन इफ द पेशेंट की एच बी कम है, तो दिस इज द ट्रू वन, दिस इज द राइट वन। तो इसमें क्या शो कर रहा है कि वन, मतलब 2 शो कर रहा है ऑलमोस्ट आरबीसी काउंट, एंड इंटू 3 6 होना चाहिए, तो ये थोड़ा सा गड़बड़ आ रही है क्योंकि ये ऑलमोस्ट 9 की तरफ जा रहा है, और 9 इंटू 3 कितना होता है, 27, और ये 41 हो रहा है, तो यू नो कि ये पेशेंट के सैंपल में कुछ तो गड़बड़ है, या तो इसका रीरन करवाओ या पेशेंट का सैंपल दोबारा लो। हो सकता है पेशेंट का सैंपल हीमो कंसंट्रेशन हुआ हो, क्योंकि हेमाटोक्रिट बहुत ज्यादा आ रहा है बट आरबीसी काउंट कम है, ऐसे कैसे हो सकता है, दैट इज, मतलब जस्ट थिंक अबाउट थ्योरेटिकल, ये तो चलो फॉर्मूला की बात है, जस्ट थिंक अबाउट थ्योरेटिकली ऑल्सो, ऐसे क्या, हेमाटोक्रिट का मतलब क्या होता है, पैक्ड सेल वॉल्यूम। तो अगर इतनी हेमाटोक्रिट है 41, ऑलमोस्ट नॉर्मल की रेंज में ही है, बट आरबीसी इतने कम, नॉर्मल की रेंज में नहीं है ना वो,
तो ये कोरिलेट करना सीखो। ये तीनों चीजें इंटू 3 का फॉर्मूला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब इतना रिफ्लेक्स बन जाना चाहिए हर सीबीसी को देखते वक्त, हर, क्योंकि 75 बार नॉर्मल सीबीसी भी तुम पर डे देखोगे, उसको देखते भी ये आइडिया हो जाना चाहिए, हाँ ये सही था, ये प्रोसेसिंग सही हुई है इस सैंपल की। सो व्हाट इज द नेक्स्ट पॉपुलेशन, वी हैव डब्ल्यूबीसी काउंट। अब ये आपके डिफरेंशियल आपको अलग अलग देती है। अब सबसे पहले हमें पता है कि 3 पार्ट है, 3 पार्ट मशीन है हमारी। जो 3 पार्ट है, इलेक्ट्रिकल इम्पीडेंस का प्रिंसिपल अगर याद हो, मैंने बोला था कि अपर्चर के थ्रू सेल पास करता है, एक पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड मशीन में सेट है, ठीक है, उसके थ्रू अपर्चर के थ्रू नई अपने सैंपल डाला था, उसमें से नया सेल पास किया। अब वो उस सेल के साइज के हिसाब से जो पल्स या फ्रीक्वेंसी जनरेट होगी, उसकी स्ट्रेंथ क्रिएट होती है, जिसकी वजह से हिस्टोग्राम बनता है, जिसकी वजह से आपकी रेंज आती है कि हाँ इस रेंज के बीच में फॉल कर रहे हैं मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सेल्स जो पास कर रहे हैं उस टाइप के। तो आपके ये इलेक्ट्रिकल इम्पीडेंस और ऑप्टिकल स्कैटर का एक्सपीरियंस है, का प्रिंसिपल है। और ये आपको 3 तरह के देता है, लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल और फिर बीच में मिड रेंज। मिड रेंज में आपके मोनोसाइट, इओसिनोफिल और बेसोफिल आते हैं, ठीक है। जो 5 पार्ट काउंटर है उसका प्रिंसिपल ऑब्वियसली अलग होगा, क्योंकि वो चारों के चारों सॉरी पांचों के पांचों सेल को अलग से दे रहा है, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, लिम्फो, मोनो, बेसो को सबको दे रहा है। इसका एक प्रिंसिपल होता है जिसकी शॉर्ट फॉर्म है वीसीएस, वॉल्यूम कंडक्टिविटी स्कैटर। तो ये सबको मेजर करते हुए वो पांचों सेल को अलग अलग डिलीनिएट कर पा रहा है। चलो लेट्स डिस्कस डब्ल्यूबीसी हिस्टोग्राम। वही जो मैंने आपको बताया, एक लोअर लिमिट सेट है, एक अपर लिमिट सेट है, और ये सेल की वॉल्यूम के हिसाब से, ठीक है, यहाँ पे आपका सेल साइज, यहाँ पे आपका सेल साइज है, यहाँ पे आपकी फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो ये न्यूट्रोफिल्स की सबसे ज्यादा, ठीक है, सेकंड पीक है, जो फर्स्ट पीक है लिम्फोसाइट की, और फर्स्ट और सेकंड पीक के बीच में एक और पीक है जो कि मोनोसाइट और इओसिनोफिल, बेसोफिल की जो मिड रेंज आ रही है, ठीक है। जो डब्ल्यूबीसी हिस्टोग्राम जो 3 पार्ट है, साइज ऑफ द सेल एक्स एक्सिस पे प्लॉट किया, फ्रीक्वेंसी ऑफ द सेल वाई एक्सिस पे प्लॉट किया हुआ है। सो ऑटोमेटेड काउंटर ने वही एक लोअर डिस्क्रिमिनेटर ऑलरेडी सेट है, अपर डिस्क्रिमिनेटर ऑलरेडी सेट है। तो डब्ल्यूबीसी काउंट क्या है, लोअर लिमिट से लेके अपर लिमिट के बीच में जितने सेल हैं, दैट इज योर एंटायर डब्ल्यूबीसी काउंट। और बाकी 2 ट्रफ्स बन रही हैं, 1 और 2। मैं पीक्स की बात कर रही तब, ये ट्रफ्स ऑफ कोर्स उनकी भी। तो पीक बिटवीन LD और T1 इज फॉर योर स्मॉलेस्ट सेल विच इज योर लिम्फोसाइट्स, और लार्जेस्ट सेल्स की T2 और लिमिटर न्यूट्रोफिल्स, और बीच में आपके इओसिनोफिल, मोनोसाइट, बेसोफिल, प्रोमाइलोसाइट या ब्लास्ट या माइलोसाइट या मेटामाइलोसाइट भी इसी में ही आते हैं। सिमिलरली जैसे आरबीसी फ्लैग बोला था, वैसे डब्ल्यूबीसी फ्लैग भी होता है, आपकी मशीन शो कर देती है। 5 पार्ट का वॉल्यूम कंडक्टिविटी स्कैटर का प्रिंसिपल होता है, इन एडिशन टू द इम्पीडेंस एंड ऑप्टिकल लाइट स्कैटरिंग, जो कि 3 पार्ट का प्रिंसिपल था। Coming to platelet count, again directly measured है ये platelet count का, again there is a lower limit and there is an upper limit. इसकी कंपैरेटिवली थोड़ी फ्लेक्सिबल होती है, क्योंकि माइक्रो इरिथ्रोसाइट्स का जो लोअर लिमिट है ना, वहाँ पे वो कॉमन साइज रेंज रहता है, तो वो एक साथ भी रीड हो सकता है, इसलिए थ्रू सूडो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया आ सकता है पेशेंट को, ठीक है। ये प्लेटलेट डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, लोअर लिमिट, अपर लिमिट और एक फिक्स डिस्क्रिमिनेटर है। इसके कर्व्स थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं, इसमें मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगी, बट 3 पैरामीटर्स इसके जो हमें देता है हमारी मशीन, प्लेटलेट डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ, मीन प्लेटलेट वॉल्यूम और प्लेटलेट क्रिट। अगेन प्लेटलेट के भी फ्लैग आते हैं। अब स्पूरियस प्लेटलेट काउंट, हाँ, जो ऑटोमेटेड एनालाइजर्स पे आएगा, जो सूडो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया जिसे हम बोलते हैं, या तो आपके सैंपल में ही क्लॉट था, स्टार्टिंग ऊपर से शुरू करते हैं, सैंपल कलेक्शन के दौरान आपका क्लॉट बन गया है, ईडीटीए की वजह से एग्रीगेशन ईडीटीए इंड्यूस चेंजेस होती है, तो ईडीटीए की वजह से एग्लूटिनेट बन गया, प्लेटलेट सेटेलिटिज्म हो गया अराउंड डब्ल्यूबीसी, रेड सेल के फ्रेगमेंट्स, माइक्रो या फिर माइक्रोस्फेरोसाइट्स, दे आर बीइंग रेड एज प्लेटलेट्स, और क्रायोग्लोबुलिन्स और या फिर लिपिड्स की वजह से। दिस कॉजेज आर बाय द वे वेरी इंपॉर्टेंट, समबडी कैन आस्क यू स्यूडोथ्रोम्बोसाइटोपेनिया की कॉजेज। अब तुम बोल रहे हो कि सब कुछ तो हीमो एनालाइजर बता दे रहा है, ठीक है, हमें थोड़ा सा आइडिया हो रहा है, तो मैनुअल माइक्रोस्कोपी क्यों कर रहे हैं हम, माइक्रोस्कोप देख देख के क्यों ले रहे हैं, क्यों हीमेटोलॉजी में माइक्रोस्कोप का क्या पर्पस है। तो तुम अपने एनालाइजर से कंफर्म करोगे डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट का नंबर, ऑफ कोर्स आरबीसी नंबर नहीं कंफर्म कर सकते, बट डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट का नंबर तो कंफर्म कर सकते हो ना। फिर आरबीसी की मॉर्फोलॉजी बताओगे, साइज, एनाइसोसाइटोसिस तो नहीं है, फिर वेरिएशन क्या है शेप्स में, मॉर्फोलॉजी वगैरह सब बताओगे, ठीक है। फिर असेस करोगे क्या डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट है, उनकी डीएलसी, और क्या सारे मेच्योर हैं, और अगर एबनॉर्मल सेल पड़ी हैं, इमेच्योर टाइप पड़ी हैं, कौन सी टाइप की पड़ी हैं, तो वो प्रॉपर जो डीएलसी दोगे वो तुम मैनुअली दोगे।
वेरी ब्रीफली अनीमियाज डिस्कस करूंगी, उसके लिए सेपरेट यू नीड डिस्कशन, सेपरेट वीडियो डिटेल। अब ये बहुत ब्रीफली है कि आपके पास एक सैंपल आया, पेशेंट की HB 8-9 के आसपास है, थोड़ी कम है ना HB, और RBC 5 नॉर्मल लग रहे हैं, हेमाटोक्रिट 33-3 का रूल नहीं ना फॉलो हो रहा, MCV भी कम है, MCH भी कम है, MCHC भी कम है, RDW बहुत ज्यादा है। ठीक है, पेशेंट का स्मीयर बनाया हमने, तो आपको तरह तरह के आरबीसीज की शेप मिल रही है। अगेन, सीवियर आयरन डेफिशिएंसी और जो मॉडरेट या माइल्ड आयरन डेफिशिएंसीज में जो मेन फर्क ये है कि सीवियर आयरन डेफिशिएंसी में सब तरह के सेल आएंगे, इवन टारगेट सेल आ जाएंगे, पेंसिल सेल, पॉइकिलोसाइटोसिस है ना एक्सट्रीम वाला, तो टीयर ड्रॉप सेल्स भी आ जाएंगे, सब तरह के सेल्स आ जाते हैं। तो आपकी वो डिस्क्रिप्शन में आपका दिखना चाहिए कि तरह तरह के मार्क्ड एनाइसोसाइटोसिस अगर लिख रहे हैं तो आप डिफाइन करो कि हाँ हमें तरह तरह के सेल मिल रहे थे जब आप अपनी रिपोर्ट बना रहे हैं ना जीबीपी की। और दिस इज अगेन, एंड यू नो के साइज जो हम कंपेयर कर रहे हैं, जो स्मॉल लिम्फोसाइट के न्यूक्लियस से कंपेयर कर लेना, आरबीसी छोटे हैं सारे, इसलिए हम उन्हें माइक्रोसिटिक बोल रहे हैं। जस्ट टू डिस्कस वेरी ब्रीफली, अगेन इसके लिए यू नीड सेपरेट क्लास, दिस इज लाइक नॉट, दिस विल नॉट बी सफिशिएंट। ओके, जस्ट अ ब्रीफ डिस्कशन कि आपने देखा कि आपकी एमसीवी एमसीएच लो है, आपने ब्लड फिल्म और अपने सीरम फेरेटिन लेवल करवा के देखे, तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया अगर आपने सस्पेक्ट किया था तो फेरेटिन लेवल लो आने थे, ठीक है, और आपका आईडीए था। फिर लेकिन अगर फेरेटिन लेवल नॉर्मल थे बट आरबीसी काउंट आई था, तो आपने इलेक्ट्रोफोरेसिस, तो कोई हीमोग्लोबिनोपैथी है। इफ यू नो माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक अनीमियास का सीता माँ करके एक वो था, शॉर्ट फॉर्म निमोनिक, सिड्रोब्लास्टिक आयरन डेफिशिएंसी, थैलेसीमिया, अनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज। ठीक है, मिगेलोब्लास्टिक में सीवियर में भी हो सकता है, और दिस आई थिंक एब्लास्टिक अनीमिया। ठीक है, तो ये यू जस्ट हैव टू रिमेंबर दिस, बट मेनली द फोर सीटा। ठीक है, अगेन दिस नीड्स अ सेपरेट क्लास। ओके, अनदर पेशेंट, HB बहुत 5.9 है, RBC 1, हेमाटोक्रिट भी बहुत कम, MCV लेकिन बहुत बड़ी हुई है, MCH भी बड़ी है, MCHC, RDW देखो भाई कहाँ पहुंची हुई है। तो आपने स्मीयर बना के देखा तो आपको हाइपर सिगमेंटेड न्यूट्रोफिल मिल रहे हैं और मैक्रोसाइट्स मिल रहे हैं, इन इस न्यूक्लियस से साइज बड़ा है ना इन सब सेल्स का। ठीक है, अनदर पिक्चर जस्ट टू सभी, ठीक है, जस्ट सो दैट यू कैन कंपेयर मैक्रोवेलोसाइट्स। ठीक है, और ये इधर वाला लेफ्ट वाला नॉर्मल पिक्चर है, दिस इज योर मैक्रोसिटिक पिक्चर, मेगालोब्लास्टिक पिक्चर। नाउ यू नो कि फोलिएट और B12 मेन कॉजेज हैं, बट और भी काफी सारी कॉजेज हो सकती हैं। पेशेंट को कोई ड्रग हिस्ट्री, पेशेंट को अल्कोहल हिस्ट्री, LFT और TFT वगैरह हुए होने चाहिए। अगर डायग्नोस इन सब लीजन्स लीजन्स कह रही हूँ, इन सब एंटिटीज का डायग्नोसिस क्लियर होगा, वेदर इट इज माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम या फिर विटामिन डेफिशिएंसी, अल्कोहल या ड्रग अब्यूज, लिवर डिजीज या हाइपोथायराइडिज्म, इन सब में आपको क्लियरली पता चल जाएगा। पर अगर नहीं क्लियर, देन यू हैव टू गो फॉर रेटी काउंट, एंड अगर रेटिक काउंट हाई है दैट मीन्स उसकी बोन मैरो तो सही है, ही इज प्रोड्यूसिंग रेटिक्स, तो कोई उसको एक्यूटली लॉस हो रहा है या फिर उसको हीमोलिटिक एनीमिया है। बट अगर रेटिक काउंट भी लो है दैट मीन्स बोन मैरो में ही कुछ प्रॉब्लम है, तो इट माइट बी MDS या फिर सम बोन मैरो का इशू। ओके, again this is very brief, this is, you have, like, I might make a video separately on anemia just discussing all of these entities. And of course, there's something called as rheumatic normocremic anemia also. Just again, I'm not discussing anemias in detail. Just wanted you to be familiarized with indices and how you have to look in the smear. Again, red cells, जब आप देख रहे हो, तो you can see any type of red cells, and several number of causes are available. You have to remember all of this. Inclusions मिलती हैं, of course. EDTA, your anticoagulant that you use for your hematology sample, ethylene diamine tetraacetic acid. There's something called as EDTA changes that you should be familiar with. So changes occur regardless of the anticoagulant. The red cell count, WBC count, platelet count, red cell indices are stable for 8 hours. Okay. And after that, PCV and MCV start to decrease. Osmotic fragility increases. ESR decreases. Best to count leukocyte and especially platelets within 2 hours. उसके बाद वो गिरने लगते हैं, especially if there's an excessive amount of EDTA. Coagulation test stability is critical for the diagnosis and treatment of coagulopathy. So within 2 hours, if the blood or plasma is stored at different at 22 to 24 degrees Celsius, 4 hours at 4 degree, 2 weeks at 220 degree, and 6 months का अगर आपने 70 degree पे store किया है. For serum or plasma test, blood should be centrifuged within 5 hours of collection.
And for vitamin B12 and folate assays, the serum or plasma should be kept at 4 degrees Celsius or minus 20 degrees Celsius. I know this was beyond the scope of CBC, but I just wanted you to know. So there's something called as EDTA changes. Let's discuss them. So this is basically the effect of storage on blood cell morphology. So within a few hours, they can also occur in a defibrinated blood. Uh, so let's say, so neutrophils में जैसे cytoplasmic vacuolation आ जाना, loss of granules आ ले जाना, elongated nuclei, the segmentation, something जब वो segment हो जाते हैं, टूट जाते हैं, उसे बोलते हैं Pelger hue abnormality या pseudo Pelger hue abnormality, undefined chromatin या फिर pycnotic हो जाना, cytoplasm का rupture हो जाना, smudge cell बन जाना, RBCs का crenate हो जाना, burst cells, echinocytes, spherocyte, electrocyte fragments and hypochromia. So all of these changes can occur just because of EDTA also. एंड हमने स्यूडो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया की कॉज पढ़ी थी, तो प्लेटलेट्स में जो चेंज आता है कि वो क्लम्प्स में बन बैठ सकते हैं. ठीक है. सो दीज वर द रेफरेंसेस. दीज 3 बुक्स आर अमेजिंग. बाय आई नो कि बहुत हल्के पढ़नी पढ़नी बोली जाती है और वो आपको पढ़नी है बेसिक समझने के लिए, बट उसके बाद डेसी और हेनरी टॉड और हॉफब्रांड पे भी आओ. हॉफब्रांड इज फॉर योर थ्योरी and Dacey is for hematology, and Henry Todd is clinical hematology, which is hematology but also biochemistry. Okay, so that was all. I hope you understood the topic nicely, and I tried to make it very simple. Let me know if you like this video, and let me know if there's other topics that you would like me to cover, like any basics that you would like me to cover in hematology. All the best.